Good morning, students. Class 8th Science. Today is our new chapter Light, lesson 16. We have known that light travel in the straight line. Light जो है straight line में travel करती है. This is known as rectilinear propagation of light. Rays of light reflected from plane mirror. It extend backward, intersect at the point. The image is formed at this point. तो जो लाइट रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर पर, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट पर ही इमेज फॉर्म होता है. ए रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन. और रियल इमेज को हम कैप्चर कर सकते हैं कहाँ पे? स्क्रीन पर. ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट कैप्चर ऑन स्क्रीन. वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर कैप्चर नहीं हो सकती. Laws of reflection of light. Definition of the terms. First law of reflection, second law of reflection. Variation of the second law of reflection. Image form the plane mirrors. Image formation. Characteristics of image formed. Lateral inversion, regular and irregular reflection. Multiple reflections. Dispersion of light. Human eyes. Structure, function, defects, correction of defects. We have discussed whole things in this chapter. If your previous class you have learned that we can see the object only when the light falls, the object bounce back and reaches our eyes. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर फॉल करके हमारी आइज़ तक बाउंस करके पहुंचती, वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. When light bounces back after striking the surface, we say the light has reflected. This is known as reflection of light. Let us now see that what happens when the light falls on a plane mirror. A plane mirror has a smooth polished surface. When a ray of light strikes the surface of plane mirror, it gets reflected. A plane mirror reflects light in a regular manner. The light from a torch falls the mirror and reflected back to the regular manner. In this lesson we shall study reflection of light in details. इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में पढ़ेंगे. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. द reflection of light occurs according to certain rules. These are called laws of reflection. To understand the laws of reflection of light, let's familiarize ourselves with some term related to reflection of light. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ रूल्स हैं, वो जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं, और उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा. इंसिडेंट रेज. ए रेज ऑफ लाइट विच स्ट्राइक टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ऐसी जो रेज है लाइट की जो स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसे इंसिडेंट रेज कहेंगे. और रेज आर डी आई हैज ए इंसिडेंट रेज इन द फिगर. You have seen the diagram. Di is the incident ray and refracted ray. Here Ia, and it is the mirror. Point of incident. The point which is incident rays strike to reflecting surface is called point of incident, and the point of incident in figure is capital I. Reflected ray. The incident ray which reflects after striking the reflected surface is called reflected ray. तो जहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद रेज वापस आती है वहाँ रिफ्लेक्टेड रेज होगा, और वो आई ए से रिप्रेजेंट होता है. नॉर्मल. द परपेंडिकुलर ड्रॉन द पॉइंट टू इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल. द लाइन एम आई इज द नॉर्मल इन फिगर. एम आई इज परपेंडिकुलर टू ई टी. एम आई जो है ये परपेंडिकुलर है किसके? ई टी के है. एंगल ऑफ इंसिडेंट. द एंगल बिटवीन incident ray and normal is known as the angle of incident. Here DIM is the angle of incident. DIM angle of incidence. Angle of reflection. D
Angle of reflection here MIA. The angle between the normal and the reflected rays is called the angle of reflection. Angle MIA is angle of reflection. First law of reflection. The incident ray and the normal drawn to point of incident and the reflected rays all lies the same place. Second law of reflection. When the ray of light reflected by the surface angle incidents equal to the angle of reflection. Here C is represent to point of incident. C is represent to point of incident. AC represent AC, E represent incident ray and CD represent reflected ray. CM is the normal or perpendicular to ET. According to this second law of reflection, angle of incident, angle ACM equal to angle of reflection MCD. Thank you, student.